Shifting focus now, the face-off between the TMC and the BJP has taken an ugly turn with violence dominating the streets of West Bengal following the arrest of TMC MP Sudeep Bandyopadhyay. BJP offices have been attacked, highways have been blocked and protests have been organized in the national capital as well. What the BJP calls a crackdown on corruption has been labelled as political vendetta by the TMC. Massive protest, open vandalism, alleged bombing at a BJP leader's house. Even a union minister's home attacked. The arrest of 2 TMC parliamentarians in a chit fund scam has kick-started an unprecedented face-off between the TMC and the BJP. সবচেয়ে প্রথম অ্যারেস্ট করা উচিত নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহকে এবং আমাদের অ্যারেস্ট হাতে ক্ষমতা আছে গায়ে জোরে এমনকি কোর্টগুলোকে পর্যন্ত জামিন দিতে দেয় না যাদের অ্যারেস্ট করে ওনার জন্যই আজকে কখনো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কখনো মায়াবতীকে কখনো সোনিয়া গান্ধীকে কখনো লালু প্রসাদ যাদবকে এবং আরো পলিটিক্যাল পার্টি আমি জানি যারা ভয়ে চুপ করে আছে কিন্তু প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট প্রত্যেকেই বিরক্ত এমনকি নিজের পার্টির লোকেদের পর্যন্ত স্পেয়ার করে না। Meanwhile, the BJP has hit back denying allegations of interfering with the CBI probe. आज चिट फंड का जो विशेष करके शारदा का जो घोटाला हुआ है उसका ऊपर जो इंक्वायरी चली पहला जिम्मेदारी उन्हीं का था और उसको जो आज जो कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है उन्हीं का देन है इसीलिए उनको जहां भी दिया जाता है सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है उनकी रोल पर पूरा हमारा संदेह है। What makes the CBI to come forward with this investigation right at this time when Mamata Banerjee is opposing against the Modi government's decision of demonetization. This demonetization is affecting on the people like anything. TMC cadres were accused of attacking BJP offices and targeting party leaders. देखिए मेरे घर पे अटैक हो रही है, बहुत शर्मनाक घटना है। राजीव कुमार जी को दीदी ने बंगाल में बिठा के रखी है एज पुलिस चीफ। आप बताइए वही राजीव कुमार वही सिट को एसआईटी जो बनाई गई थी शारदा और इसके लिए रोज वैली के लिए द मेन जॉब वाज ऑफ दैट सिट एंड राजीव कुमार वाज टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। जो भी है जला के खाक कर दो ताकि कोई पकड़े नहीं। Don't touch me! क्या हाथ तुम लोग क्या लोग? The TMC took its fight to Delhi, calling their MP's arrest a political vendetta as Mamta had criticized demonetization. We are protesting against Narendra Modi and we are demanding his resignation. Our fight against demonetization will go on in spite of all the conspiracies hatched by Narendra Modi. We are also demanding immediate arrest of Babul Supriyo, who was on the payroll of Rose Valley. Bengal's finance minister even walked out of a pre-budget meeting chaired by Arun Jaitley. As Mamta and Modi war is getting worse by the day, CBI court has sent Trinamool MP Sudeep Bandyopadhyay on a 6-day CBI remand. And with this, it appears to have reached at a point of no return. With Indrajit, Parveena, Manogya, Bureau Report, India Today.